हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश का 4.3 गोल्डन चेन, उसके वार्मिंग अप, चिट चैट, मार्जिनल क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? चिट चैट का क्वेश्चन फर्स्ट है, डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड? आंसर इज आई डू हैव एन ओल्ड फ्रेंड। सेकंड, व्हाट इज नीड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो? आंसर, for friendship to grow, we need unselfish love, loyalty, sensitivity, and understanding, etc. between the two friends. Third question say, how do you feel if you don't have any friend? Answer, we feel lonely, bored, and uneasy without a friend. Four, why do you spend a lot of time in the company of friends? Answer, we spend a lot of time in company of friends because it makes us happy. We can talk to them and share our grief or joy with them. We get relief in their company. Fifth, why do you share secrets, happiness and sorrow with your friends? Answer, we share our secrets, happiness and sorrows with our friends because we love them. We have full faith in them. We can open our minds to them and get relief in our life. We can trust and rely on them. First questions क्या है? Write 5 points each about does and don'ts the true friendship. तो आपको यहाँ पर पॉइंट दिए, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और डोंट्स क्या क्या है? अलाउ यू टू कॉपी आंसर ड्यूरिंग एग्जाम। तो डोंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। We have already learned that when there occurs a comparison in the lines of a poem, the figure of speech in that lines is a simile. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, तो उसका आंसर क्या है? फर्स्ट सिमाइल, उसके बाद सिमाइल, उसके बाद मेटाफोर है। तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्या है? When opposite idea occurs in same line of the poem, the figure of speech that occurs in that line is called antithesis. तो आपको एंटीथेसिस के एग्जांपल दिए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मार्जिनल क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट, टू व्हाट टू थिंग्स इज फ्रेंडशिप कंपेयर्ड? तो उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट होल्ड्स फ्रेंड क्लोजली टुगेदर? आंसर, डीप एंड ट्रू लव्स होल्ड फ्रेंड्स टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन से, हाउ लॉन्ग डज ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट? आंसर, ट्रू फ्रेंडशिप कैन लास्ट फॉर years as long as memory life. Four, which possession is more precious than gold? Answer, having understanding friend is more precious than gold. इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन है, वो अभी हम देख लेते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड वर्टिकली एंड प्रिपेयर एन acrostic using every letter in the name. Refer to word play on page number 73। तो आपके बुक का 73 पेज लिख लिए और मैंने यहाँ पर आंसर दिए, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट करने से पहले हमें क्या कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है वो लिखनी है। तो हमारा क्या है? बी स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। उसके बाद हमारा डी स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल। और ई स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू देन गोल्ड। थर्ड, रीड द पोयम एंड कंप्लीट द वेब। फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्लेस टाइम, उसके बाद ब्यूटी, उसके बाद प्रेसियस जेवेल, प्राइसलेस गिफ्ट, वर्थ द गोल्ड और गोल्डन चेन। फोर्थ है से व्हाई फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू द फॉलोइंग, अ गोल्डन चेन। आंसर, फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू गोल्डन चेन बिकॉज इट्स लिंक अवर डियर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
बी आहे अप्रिसियस जेवेल. Answer. Friendship is compared to precious jewel because it can't be bought or sold. C. A priceless gift. Answer. Friendship is compared to the priceless gift because it grows more precious as each year passes by. Fifth question say, refer to the poem and write down 5 reasons why friendship is the best gift anyone can give you. So first, it grows more precious as each year passes. Second, friendship binds kinder hearts together. बाकी के आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द वर्ड्स दैट गो विद द फॉलोइंग। फर्स्ट है प्रीसियस जेवेल, काइंडर हर्ट्स, थर्ड हैप्पी मेमोरीज, प्राइसलेस गिफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाइम और अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। Seventh thing, match the lines with the figures of speech they contain. You may also refer word play on पेज नंबर 74 फॉर हेल्प। तो आप 74 पेज नंबर का हेल्प लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फर्स्ट का है मेटाफोर, सेकंड का एंटीथेसिस, उसके बाद थर्ड का सिमाइल, उसके बाद फोर अल्टरेशन और उसके बाद फिफ्थ का मेटाफोर। Eighth, think on your own and say why to friendship can be compared to the following. A. An evergreen forest. Answer. Evergreen trees in the forest are our real friends. They are never feeling friends. The forest purifies our environment and save us from pollution. They provide us many useful things like roads, wood, medicines, etc. It gives us great joy by tending wild animals and birds. Man has unmatched and inseparable friendship with the evergreen forest. Secondly, an ever flowing river. Answer. It is a never-ending friendship between man and the ever-flowing river. It is kind to all mankind. It suffers a lot to help people selflessly. It gives motherly love to people and they look upon it as the mother. It blows and blows away the dirt, helping them to clean everything. Rainbow after heavy rain. Answer. The friendship between the rainbow and man is undesirable. After the heavy rain, the sight of rainbow gives great joy and pleasure to people. The colors of the rainbow refresh their minds. Man is always eager to watch the rainbow. Like a cheerful friend, the rainbow displays the magic of nature and pleasures all. When the question say, think and develop a story that leads to a conclusion. A friend is need is a friend indeed. तो आपको यहाँ पर स्टोरी दी हुई है, यहाँ से आप डायरेक्टली स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.